हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। सर, ये स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है ना अभी? हाँ दिख रहा है। तो, तो मैं समझो अभी कोई भी नाम रख करके कोई भी यदि मटेरियल सेलेक्ट करती हूँ ना, हम्म, जिसका प्लांट मैंने पहले से देखा है, तो वो मतलब प्लांट वाला एरर आ ही रहा है, मतलब ऐसा कुछ मैं भी। आपके स्क्रीन पे जैसे अभी देख रहा हूँ कि आप वेस्ट जनरेटर क्रिएट ऑप्शन के पास हो। हाँ, यस सर। हम्म, समझो मैंने ये एक ऑप्शन करी है, WA जनरेटर 08। अच्छा। पार्टनर टाइप में वेस्ट जनरेटर कर देती हूँ। इसमें मैं कुछ भी डाल दे रही हूँ, अभी समझो मैं सिर्फ अभी हाँ चलेगा आपको चलेगा, दिखाने मुश्किल नहीं है। हाँ दिखाने के नो पर्पज से प्रॉब्लम। कि एरर वो भी कहाँ आ रहा है। जरूरत नहीं है, आप ऑडिट साहब उड़ा दो, नो प्रॉब्लम। सर अभी समझो मैं वेस्ट जनरेशन में गई यहाँ। नंबर आपको नहीं डालना है, वो सिस्टम यस सर, अपने आप यस सर, डालेगा। हम्म सर अभी जैसे मैंने इसमें से कोई भी लिया ना, कोई हम्म भी लिया, हम्म तो भी वो एरर दिखा ही रहा है। जैसे अभी मैंने ये वाला ले लिया, समझ लीजिए ये वाला। हम्म, ठीक है। ठीक है। डबल क्लिक, हाँ ओके। इसमें तो स्पेसिफिकेशन था, इसका मैं आपको मतलब वो भी दिखा देती हूँ, मतलब प्लांट नंबर SE69 में। 3000 है ना प्लान नंबर, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं इस है, अगर आप श्योर हो तो नहीं सर, चलेगा। ये मैंने दूसरा दूसरा बना के दिखा रही हूँ, मतलब मैं कोई भी बना रही हूँ तो भी वही एरर आ रहा है सर। आप मुझे एरर कोई भी दिखाओ, बना रही हूँ। सबसे पहले हाँ, मुझे ये एरर सर। दिखाओ। नहीं, MARD नहीं, MARC में आप जाके चेक करो ना। हाँ ठीक है, RC में, MARD में स्टोरेज लोकेशन के लिए कर रही हूँ। मैं एक्चुअली सर कोई भी मटेरियल सेलेक्ट कर रही हूँ ना, तो अरे ये कौन सा चलेगी, कौन चलेगी? नहीं नहीं नहीं, टेबल देखो, टेबल चेंज हाँ, करो। एक- इसमें देखिए हम्म सर 3000 ही दिखा रहा है अभी। हम्म यदि मैं एंटर भी की ना, तो हम्म यहाँ एरर दिखा देगा, देखिए ये वाला एरर दिखा रहा है सर। किसी भी मतलब कहीं पर भी कर रही हूँ तो मतलब एरर दिखा रहा है, कोई भी मटेरियल हम्म सेलेक्ट करती हूँ तो एरर दिखा रहा है। एक काम करो, आप वो प्लान को हटा दो, प्लान नंबर को हटा दो। हाँ अभी एंटर करो आप। ठीक है, यस। अब विदाउट प्लान नंबर ही आप क्रिएट करो, चलेगा। लगता है मतलब कुछ प्लान प्रॉब्लम नंबर। है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसलिए वो प्लान नंबर डालने से ना वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। कुछ ओके प्रॉब्लम सर, है, इसी। टेक्निकल प्रॉब्लम है। अच्छा, मतलब विथआउट प्लान नंबर भी मैं कर सकती हूँ। हाँ आप स्टोरेज कर सकते लोकेशन हैं। भी मैंने देख करके डाला था वैसे, लेकिन फिर मैं कोई भी मटेरियल सेलेक्ट करी थी तो यही एरर दिखा रहा था, तो फिर मैं आगे हम्म। नहीं बढ़ी सर। नहीं, स्टोरेज लोकेशन मुझे लगता है कि इस वेस्ट मटेरियल के ना के लिए उन्होंने क्रिएट नहीं किया है। आप एक काम करो, दोबारा जाके टेबल्स में MARD टेबल के अंदर चेक करो स्टोरेज लोकेशन है कि नहीं पहले। सर है, स्टोरेज लोकेशन मैंने चेक किया था, अब स्टोरेज ट्राई लोकेशन भी करो था। एक बार, इस ट्राई करो MARD। हम्म, नहीं ये कुछ प्रॉब्लम है, बैक बैक जाइए, एंटर मटेरियल नंबर, हाँ एग्जीक्यूट, नहीं है, ठीक स्टोरेज है, इसमें लोकेशन नहीं नहीं है है। पर। हम्म हाँ, जैसे मैं दूसरे मटेरियल भी दो चार मटेरियल में ट्राई करके देखा था ना, मैंने तो हम्म उसमें था स्टोरेज लोकेशन, तो वो मैंने डाला था।
हम्म। पर ये प्लांट वाला एरर तो मतलब सारे मटेरियल जो भी मटेरियल डाली थी सब में आ रहा था, हम्म। तो फिर मैं मतलब फिर उसके नहीं, आगे फिर बढ़ी ही नहीं मैं। फिर तो ये सर्वर में कुछ इश्यू है, इस वजह से आपको वो मैसेज आ रहा है। वरना सर तो और एक करेक्ट कुछ। प्लान नंबर है। वो जो मटेरियल आपने डाला है उसका प्लान नंबर वही है, 3000। वो तो यस सर। लॉजिकली हमने देखा, टेबल्स में भी वही आ रहा है, बट आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है इसमें। सर और ये जैसे आपने बताया फ्रेज, जैसे अभी जो था फ्रेजेस, तो सर इसमें यदि हमको फ्रेज डालने होंगे हम्म। तो फिर हमको उसके लिए मतलब लाइब्रेरी सारा फ्रेज सेट फ्रेज ग्रुप सारा क्रिएट करना पड़ेगा क्या, और फिर असाइन करना पड़ेगा क्या? नहीं, ऑलरेडी ये रहेगा ना। ऑलरेडी रहेगा, आपको बस इस पता लगाना है क्या है वो। क्योंकि इसमें जो हम जो इसमें फ्रेजेस नहीं है ना सर, कई इसमें हाँ, ये मालूम है। रिदम रिदम, इसमें, हाँ तो फ्रीक्वेंसी, इसमें यदि साइकिल। फ्रेज डालना, हाँ तो इसमें यदि हमको फ्रेज डालना रहेगा तो फिर हम कैसे डालेंगे, मतलब वो जानना था आपको मुझे क्रिएट मतलब। करना पड़ेगा। फ्रेज मैनेजमेंट आपने अटेंड किया था ना? यस सर, तो फिर लाइब्रेरी फ्रेज ग्रुप सारा सारा फ्रेज सेट वगैरह सारा फ्रेजेस तक पूरा मतलब सारा करके फिर असाइन करना पड़ेगा नहीं, क्या मैंने इसमें? एक और आपको क्रिएट करके दिखाया था, कस्टम फ्रेज। यस कस्टम सर, फ्रेज कस्टम फ्रेज बता। मैंने बताया था ना। तो वहां पे हमने यस क्या सर। किया था? कस कस्टम फ्रेज तो मतलब हाँ कस्टमाइज मतलब ऑलरेडी ईएचएस के भी मतलब फ्रेजेस थे कस्टम फ्रेज में, और फिर हमने कस्टम फ्रेज थे सर उसमें, पर मतलब अभी मुझे अच्छे से याद नहीं, लेकिन हाँ, ठीक कस्टम है, फ्रेज नो में फिर प्रॉब्लम। हम। कस्टम फ्रेज में हमने क्या किया था, जो स्पेसिफिकेशन में जैसे फर्स्ट एड मेजर्स में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं ना, जैसे कि फर्स्ट यस एड सर। डाई या फर्स्ट एड स्किन, अगर आप उसमें जाओगे एडवाइस में, तो बहुत सारे हम्म फ्रेजेस आपको दिखाई देते हैं। तो उसमें अगर कोई हम्म। ऐसा फ्रेज है जो आप ऐड करना चाहते हैं बट वो अवेलेबल नहीं है उसमें, तो आप क्या करते थे? वी यूज टू गो एंड क्रिएट ए कस्टम फ्रेज। एक या दो, जितना भी हमको एडिशनल वहां पे फ्रेज चाहिए होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन क्रिएट अ कस्टम फ्रेज। तो उस कस्टम फ्रेज के लिए हमको क्या क्या चाहिए? वी नीड लाइब्रेरी नेम, फ्रेज ग्रुप नेम, फ्रेज सेट नेम। अगर ये तीन चीज अगर हमको मालूम है तो हम एक नया क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा फ्रेज क्रिएट कर सकते हैं। वो एक्स्ट्रा फ्रेज या एडिशनल फ्रेज को ही बोलते हैं कस्टम फ्रेज। यस सर, तो फिर हमको वही कह रही थी, फिर मुझे लाइब्रेरी फ्रेज फ्रेज सेट फ्रेज ग्रुप सारा बना करके फिर इसमें डालना पड़ेगा क्या, हमने मतलब यदि बनाया था इसमें क्या? मेरा क्वेश्चन वही हमने है। yes, हम जब लोगों ने हमने उस समय बहुत सारा फ्रेज लाइब्रेरी फ्रेज सेट वगैरह बनाया था ना सर, उस समय तो बनाया था हमने। बनाया था, मैं बात कर रहा हूं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। ठीक है, अगर आपको नया लाइब्रेरी बनाना है आप बना सकते हो, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आएगा। आप जहाँ पे फ्रीक्वेंसी या साइकिल की जगह डालना चाहते हैं ना, अगर आपने नया यस। लाइब्रेरी, नया फ्रेज ग्रुप, नया फ्रेज सेट क्रिएट भी कर लिया, तो यहाँ पे वो नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पे जो आने वाला है ना, वो ऑलरेडी सेट है। ऑलरेडी उन्होंने डिसाइड कर दिया कि इसके लिए कौन सा अप्लीकेबल लाइब्रेरी है, कौन सा अप्लीकेबल फ्रेज ग्रुप है और फ्रेज सेट है। तो आप नया बनाकर अगर क्रिएट भी कर लोगे, यहाँ पे कैसे आएगा वो? इट विल नॉट कम। तो जो ऑलरेडी डिसाइडेड है कि भैया ये वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो भी फ्रेजेस क्रिएट होंगे वो इसी लाइब्रेरी में रहेंगे और इसी फ्रेज ग्रुप से जाएंगे, वो ऑलरेडी डिसाइड हो गया है। तो अब नया क्रिएट करके क्या फायदा होगा? ओके सर, फिर इसमें यदि डालना है तो फिर कस्टम फ्रेज में जाकर के वेस्ट मतलब जो वेस्ट मैनेजमेंट वेस्ट जनरेशन की लाइब्रेरी में जाकर के करना पड़ेगा क्या, फिर ग्रुप में मतलब सेट में? हाँ, आपको पहले पता करना पड़ेगा कि वेस्ट मैनेजमेंट का रिलेटेड कौन सा फ्रेज ग्रुप है, और कौन सा इसका लाइब्रेरी में आता है, कौन सा फ्रेज ग्रुप है और कौन सा अप्लीकेबल फ्रेज सेट है। ये तीनों चीज आपको मालूम करना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। ओके सर। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल, क्योंकि मैं दोबारा अगर वो करता हूँ, वो बैठूंगा ना, 2 घंटा इसमें निकल जाएगा। आई डोंट वांट टू यस सर, रिपीट यस सर। अगेन, क्योंकि मैंने एक बार ओ वो बता दिया था इसलिए। लेकिन मैं आपको एक हिंट देता हूँ। आप एक नया यस स्क्रीन सर। ओपन करो।
नहीं तो प्रॉब्लम नहीं है, जो आपका टेबल्स का ओपन है ना वही स्क्रीन में जाके आप। मैं इसको बैक में कर देती हूँ, ये ओपन। ठीक यस है। सर, ओपन, हाँ। आप कहाँ पे जाओगे? गो टू SPRO, जहाँ फ्रेज लाइब्रेरीज है ना वहां पे आप जाओ। बेसिक डेटा एंड टूल्स, फ्रेज मैनेजमेंट। इसमें जाऊँ, स्पेसिफाई फ्रेज लाइब्रेरी एंड हाँ। फ्रेज ग्रुप में जाऊँ सर? हम्म ओके, अभी आप यहाँ पे इतने सारे लाइब्रेरीज है ना, आप क्या करो, गो इनसाइड कस्टमर फ्रेज लाइब्रेरी, उसको सेलेक्ट करो आप, वो रो सेलेक्ट करो, डबल क्लिक ऑन फ्रेज ग्रुप। ओके, अब यहाँ पे इतने सारे फ्रेज ग्रुप हैं, आप जाके उसमें चेक करो कौन सा वेस्ट रिलेटेड का कौन सा यहाँ पे फ्रेज ग्रुप है, और रहेगा ओके हंड्रेड सर। परसेंट अब थोड़ा धीरे धीरे चेक करो, इतना फास्ट जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। डेंजरस गुड्स का देखो, आपको अगर फ्रेजेस जी। डेंजरस गुड्स रिलेटेड अगर बनाना है, देखो ये है फ्रेज ग्रुप उसका। यस सर। हम्म और आप ऊपर जाओ, ये एक मिनट, यहाँ पर इंडस्ट्रियल हाइजीन का भी है यहाँ पे। नहीं, उसके आगे नहीं रहेगा, आपको जो भी है आफ्टर 17th के नीचे ही आपको चेक करना है। GLM का है, टेक्स्ट फॉर डिक्लेरेशंस का है, बल्क है, आउटपुट ऑफ डेंजरस गुड्स डॉक्यूमेंट्स, हैंडलिंग हो सकता है कि ये हैंडलिंग जो है ना यहाँ पे, इट मे बी यस सर, यस रिलेटेड सर। टू वेस्ट मैनेजमेंट, ये एक हो सकता है। और अगर आप और नीचे आएंगे, वेस्ट का मैंने देखा था, exactly याद नहीं, सेग्रीगेशन हो सकता है, ये भी है, वेस्ट रिलेटेड का ही फ्रेज ग्रुप है। ठीक है। और सेग्रीगेशन, ओके सर। ठीक है, और क्या है, स्पेशल प्रोविजन, वो तो डेंजरस गुड्स में आएगा। क्लेम कार्ड, PDA, हाँ मुझे लगता है वो सेग्रीगेशन जो था ना वो है, और यस सर। उसके पहले वाला जो हैंडलिंग का था, ये जो दोनों हो सकता है ये वेस्ट रिलेटेड होंगे। ठीक है, ओके लेकिन सर। हम पक्का नहीं बोल सकते, क्योंकि जब तक आप फ्रेजेस को क्रिएट करके उसमें ऐड नहीं करते तब तक हम डेफिनेटली नहीं बोल सकते हाँ यही वो फ्रेज ग्रुप है। लेकिन क्योंकि आप एक बार ट्राई सेग्रेशन में भी करो। नीचे, हम्म नीचे भी है सर, ये वाला भी है वो फिर। डेंजरस गुड्स का है, इसीलिए TDDG लिखा हुआ है, वो डेंजरस गुड ओके। रिलेटेड है। ठीक ओके है, सर। तो इसलिए वो वाला नहीं रहेगा। एक काम करो ना, आप एक और चीज कर सकते हो, देखो, ओपन वन मोर हम्म। स्क्रीन, एक और स्क्रीन ओपन करो। ये ओपन क्यों नहीं हो रही नई स्क्रीन, शायद इसमें ओपन क्यों नहीं? जो ऑलरेडी आपका टेबल्स का ओपन है उसी में आप जाके ये करो, चेंज करो। हाँ, आप वो डायरेक्टली वहीं पे डाल सकते हैं। ठीक है, गो टू CG12। ये एक मिनट, यहाँ पे फ्रेज ग्रुप जो वहां पे सेग्रीगेशन का जो फ्रेज ग्रुप था ना, आप वो यहाँ पे ऐड करो, आप सेलेक्ट कर सकते हो यहीं से, नो प्रॉब्लम। जो सेग्रीगेशन का एक कहाँ पे है वो, ये। हाँ, आप उसको सेलेक्ट करके ऐड करो वहां पे, नाउ प्रेस एंटर। ओके, देर इज नो डेटा ऑब्जेक्ट, नहीं उसमें बता रहा है कि कोई भी फ्रेज अवेलेबल नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, Hmm, जो हैंडलिंग था ना वो एक बार आप डाल के ट्राई करो फ्रेज ग्रुप में, इन फ्रेज ग्रुप, फ्रेज ग्रुप, फ्रेज ग्रुप।
ये अगर आप पहले ही मुझे बोलते तो मैं कम से कम पता लगा के तो रखता कि ठीक है सर, रहने हाँ। दीजिए, मतलब ये मैं ट्राई कर रही थी इसीलिए। नहीं, अच्छी बात है, आप ट्राई करोगे, प्रैक्टिस करोगे तभी आप सीखोगे। लेकिन मुझे पहले ही आप थोड़ा बताओगे तो मैं कम से कम थोड़ा टाइम लगा के ना उसको रिजॉल्व कर सकता हूँ। आप लास्ट मोमेंट तक वेट मत करो। प्रेस एंटर। ये भी फील्ड है। ठीक है सर, मैं मतलब मैं समझ गई, अभी देखती हूँ सर मैं कौन सा फेस ग्रुप पे दी। क्योंकि ये बहुत टाइम लगता है। आपको फ्रेज लाइब्रेरी पता करना पड़ेगा, फ्रेज ग्रुप, फ्रेज सेट, ये सारी चीजें पता करनी पड़ती हैं। और पता है कम से कम क्योंकि 2-4 घंटा तो इसी में लग जाएगा 100%। आप मुझे थोड़ा टाइम दो। मैं अपनी तरफ से अपने सिस्टम में ये ट्राई करके ना, मैं रिकॉर्ड भी हुआ तो मैं रिकॉर्ड भी करूंगा कि मैंने ये कैसे ठीक है। फ्रेज क्रिएट किया था। आपका जो फ्रीक्वेंसी रिदम साइकिल है वो कैसे मैंने क्रिएट किया, क्या है, मैं अपना स्क्रीन रिकॉर्ड करके ना वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। लेकिन मुझे टाइम चाहिए। अगर आप टाइम नहीं दोगे तो मैं नहीं नहीं सर, कुछ नहीं ठीक कर है सर, सकता। आप कभी भी जब भी आपको टाइम मिले, फ्री होगा, मुझे मतलब सिर्फ शेयर भी कर देना रिकॉर्डिंग, तो मैं देख लूंगी। हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली। ओके सर, थैंक यू सर। और कुछ था आपका डाउट? यस सर, डाउट तो एक मुझे डेंजरस गुड में भी जो DGP 1 और DGP 2 हमने बताया था, उसमें जब मैं मेरे सिस्टम में कर रही थी तो मतलब जो US आपने एक बताया था, हाँ। ADR, वो वाला सेलेक्ट करने से तो चीजें मतलब वेल हो रही थी, पर दूसरा यदि कुछ करूं हम्म तो वो किसी भी मटेरियल में मेरा वो नहीं हो रहा था, मतलब असाइन असाइन करो ऐसे करके मतलब एरर ही दिखा रहा था, जबकि आपने जिस मटेरियल में किया था वो हम्म मटेरियल में मतलब कोई इश्यू नहीं था, पर बाकी कुछ भी मैं सेलेक्ट कर रही थी तो वो मेरे से हो नहीं आता। मैं उसी समय वो क्वेश्चन की थी, पर फिर मतलब वो रह ही गया वो क्वेश्चन। आप और वो वो मैंने अभी स्क्रीनशॉट एक्चुअली। निकाल के जैसा आप डेटा क्रिएट करके स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, तो आपका कुछ हम्म। प्रॉब्लम है, कुछ क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, वो भी आप शेयर करो ना स्क्रीनशॉट। सर ठीक है, मैं वो करती हूँ आपको। आज तो वो स्क्रीनशॉट एक्चुअली उस समय मैंने था मेरे पास, अभी हम्म डिलीट हो गया होगा। मैं हम्म। आपको शेयर करती हूँ। ठीक है, आपका जब भी डाउट होता है ना, आपको इमीडिएटली आप क्या करो, मुझे वो भेज दो। बिकॉज ओके सर, एटलीस्ट थैंक मेरे पास नहीं। टाइम रहेगा कि मैं वो क्या है क्लैरिफाई आपको कर सकता हूँ या आपकी हेल्प कर सकता हूँ कम से कम। यस सर, थैंक यू ये सर। है रीजन। ठीक है, आप वो जब भी आपको टाइम मिले, अगर आप डेंजरस गुड्स में जाके वो ट्राई करोगे, प्लीज सेंड मी द स्क्रीनशॉट। क्योंकि अभी देखो ना, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर हो गया। ये ओके हो सर। सकता है और 2 हफ्ते खींच जाए, इसलिए मैं बोलता हूँ। ओके सर। हम्म। ओके, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। तो लास्ट वीक हमने देखा था हाउ टू क्रिएट ए क्या बोलते हैं, वेस्ट जनरेटर। And we did the comparison between waste generator and waste disposer. Also, we did the comparison between waste generator and waste transporter. और अथॉरिटी मैंने क्रिएट करके दिखाया था, हाउ एग्जैक्टली कैन यू क्रिएट ए वेस्ट सॉरी अथॉरिटी। तो ये हमने देखा था अप टू लास्ट क्लास। इन दिस क्लास वी विल कंटिन्यू एंड क्रिएट ए एंट्री डॉक्यूमेंट। आपको मैंने बताया था थियरी में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ए एंट्री डॉक्यूमेंट। तो क्या होता है एग्जैक्टली एंट्री डॉक्यूमेंट? एंट्री डॉक्यूमेंट मीन्स इट इज अ डॉक्यूमेंट विच इज यूज टू मेक ए एंट्री। जैसे ही आप कोई वेस्ट को ले जाके कहीं पे डिपॉजिट करना चाहते हैं इन द वेयर हाउस, सो दैट वेयर हाउस इंचार्ज विल आस्क यू फॉर सम डिटेल्स, like what is the type of waste, how many kilograms you have generated, okay, in which part of the plant it is generated, like that some details he will ask, and then he is going to create that entry in the SAP system. तो उसको बोलते हैं हम एंट्री डॉक्यूमेंट। सो हाउ डू यू क्रिएट दैट? वी हैव ए ट्रांजेक्शन कोड WAE01 to create a entry document. So once you go to the transaction code, it will ask you which is the document category. आप किस में ये create करना चाहते हो, in which category. So you have the process with collection point, with internal entry of quantity, internal external number range, or with the purchase order. इतना सारा 4 options आएगा. You can either select with collection point or you can select with purchase order.
तो जो आप एंट्री डॉक्यूमेंट क्रिएट करने वाले हैं, इज इट विद द परचेज ऑर्डर और इज इट ओनली विद द कलेक्शन पॉइंट? कलेक्शन पॉइंट मतलब आपका जो वेयर हाउस है ना, दैट इज नथिंग बट ए कलेक्शन पॉइंट. So here you have to select, let's say I will select collection point and then click on continue. तो इससे क्या होगा, it will take you to the initial screen. This is where you can add the details of the entry document. So in the entry document, you need to add the generator details, which is the waste that has been generated, how much quantity has been generated, when you are going to send the waste outside, how much is the outgoing quantity. ये सारा information आपको यहाँ पे create करना पड़ेगा. So let's start first by selecting the waste generator. All these are waste generators, as you can see. So out of this, let me select this IDs 3000 as the waste generator. As soon as you select that waste generator, यहाँ आपका waste जो भी वो generate कर रहे हैं ना, even that will get selected. Because whenever we create a waste generator, we also enter the data, which type of waste they are generating and how much quantity they are generating. वो भी हम लोग create करते हैं. Last time when we created a waste generator, शायद आपको याद होगा, हमने waste वो कौन सा generate कर रहे हैं, कितना quantity में generate कर रहे हैं, ये भी हमने detail डाला था. So that is why just by selecting the waste generator, all the other details will be added. Next, go to there is something called as S. S matlab stock type. So what type of stock it is? It is a waste, we know, but whether it is used for quality inspection or whether it is in log status, yeah, free for use. What is this stock type? That you have to select. We have to select log because it is a waste, no. So we are not going to use it. Stock type will be yes. And how much quantity has been generated? Let's say, for example, I'm going to put here 100 kilogram. Let's say currently they have generated 100 kilogram quantity of this waste. Next, again come to the right hand side. यहाँ पे कुछ options हैं, like how many number of containers are required to keep this waste. आपको कितने कंटेनर चाहिए to store this 100 kilogram of waste? Maybe 2 containers or maybe 4 containers, whatever number you want, you can add. This is the number of containers. So let me put 2 containers and this is the container unit of measurement. तो जो आपके कंटेनर हैं उसका एरिया कितना है, हाउ डू यू मेजर? तो नॉर्मली यू हैव टू सेलेक्ट kT per meter, that is tons per meter. This is the unit of measurement for your containers. Next, we have few more options: plant number, storage location number, in which warehouse we are storing, this is warehouse number, and also you have the storage type. तो यहाँ पर it is better we select only plant number because other things, other details we don't have. So which is the plant? कौन से plant में है ये waste? Again you can take the help of tables. आप tables में जाके check करोगे, it will tell you. But I know definitely it is in the plant number 3000. Okay, so directly I will add without checking in the tables. Next, storage location. अच्छा, in which storage location are you keeping this waste? इतने सारे storage locations हैं, but unfortunately problem ये है, when they created this material, they have connected the plant number with the material, but they have not connected storage location with the material. So even though I select anything here, that will be wrong. Like for example, let's say I select here like receiving, let's say for example, or maybe US Central Warehouse, कुछ भी आप एक स्टोरेज लोकेशन सेलेक्ट करो, बट द प्रॉब्लम इज दिस इज ए इनकरेक्ट स्टोरेज लोकेशन. तो क्या होगा, जैसे मैं एंटर करूंगा इट विल शो दिस इज एरर, एरर बताएगा यहाँ. एनीवेज आई विल शो यू दैट, नो प्रॉब्लम. बट बिफोर दैट लेट मी टेक यू टू द टेबल्स. टेबल्स में भी जाके मैं एक बार आपको दिखाता हूं. देयर इज नो स्टोरेज लोकेशन क्रिएटेड फॉर दिस मटेरियल. तो कैसे करेंगे हम? वी हैव टू गो टू द transaction code SC16N and under table MARC you can check exactly if there is any storage location or not. Okay, now execute.
Okay. Okay, this is only showing plant data. MARD में check करना. Yeah, see, it is showing no values. मतलब है for this material they have created plant number but they have not created storage location. That is the meaning. If they had created, it will show what are the storage locations applicable for this material. It will show, but it is not showing. So it is understood. We don't have a storage location. So therefore here also you please remove. Don't add any storage location number. Next we have warehouse number. This also we don't know exactly कौन से warehouse में ये store कर रहे हैं. We have no idea. But you can select some random if you want to add, let's say warehouse Berlin. But it may also be incorrect. We have to collect the information from the warehouse management module and then we have to add. Directly हम ऐसे enter करेंगे, it will not accept. Anyways, we'll try. हम इसको भी add करके देखते हैं. And then storage type, let me put fixed bin storage. Next we have storage bin. I don't think there is a storage bin. नहीं होगा इसका. No, we don't have the data. Okay, then MRP data also it is not required. MRP matlab it is used in production planning module. MRP controller, like they will forecast how much production will be done. It is a production related data. So again we don't have that data with us, so you can leave it. Next, document date. We are creating a entry document. So what date do you want to maintain? I am going to put today's date as the document date here. Next, यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है, what is original material? What is this option, original material? See, this is a waste, no? यहाँ पर जो है ये IDs WA0001, this is a waste. लेकिन ये waste कौन सा material से generate हुआ है? That also you have to add. This waste material has been generated from which material? Original material. ये पूछ रहा है यहाँ पे data. So what is the original material for this waste? So again, we don't know exactly from which material it has been generated. So you can put any material name. Yeah, let's say, for example, there is no chemical atoms. Okay, let me select easy for you. This is one type of material. It's a chemical actually. So easy for you is a chemical. That is the original material from which this waste has been generated. Okay, let's consider like that. Next, batch numbers of जरूरत नहीं है because batch number we don't know. When they manufacture that product, they will have a batch number. So here you may select something, but no, see it's not coming. Batch number you can just leave it. It's not required. And even external document, it's not required. Next, yeah, again see here we have treatment. What kind of treatment are you going to do with this waste? आप कैसे treatment करोगे? Are you going to neutralize pH या आप इसको recycle करोगे? Or are you going to directly do the landfilling या incineration? What type of treatment are you going to do with this particular waste? But again see here also we don't have the phrases. तो यहाँ पर भी phrases आपको create करना पड़ेगा and then you can add.
So you need phrases here. Recoverability also, I think same thing. You have to create the phrases and then you can add. Recoverability means what is the method you are going to use to recover the material, or how are you going to do the recycling. So that recycling method you have to add here. Again, unfortunately, we don't have the phrases for both of this. So you have to create it as a custom phrases and then you can assign the data. Similarly, here supplement 1 and supplement 2, these are additional data if you want to maintain, you can maintain here. Some like comment or like a remark, if you want to add a data in both of these places, you can add. But here in the entry document, the most important data you need to add is the generator detail, what is the waste they are generating, how much quantity they are generating, and how many containers you need. At least this much of data you have to enter in this entry document. After entering all this data, press enter. But see, there is some problem. It is saying was not created for storage category. मैंने storage category यहाँ पे कुछ डाला था, but that is not applicable. Okay, see here, this storage type 005 is not applicable. Again, press enter, you will get another error. It is saying warehouse number 11 is the wrong warehouse number. हम ये material waste इस warehouse में store नहीं कर रहे हैं. It is a wrong data. That is why I told you don't enter all these details because we don't know what is the actual data. Just enter the plant number. There is one more error. Okay, warehouse number हटाना पड़ेगा. This material does not exist in warehouse 11. So again, that also we don't know. Rest of the data is correct. Okay, waste related data or who is the generator, quantity details, all these other things are correct. But when it comes to storage location and warehouse number and all, it is not correct data. So no problem, you can leave it there and now save your entry document. As soon as you save the entry document, you can see that now outgoing quantity has become activated. अभी आप यहाँ पे कितना quantity आप बाहर भेजने वाले हो? Whether entire 100 kilogram or are you going to send 50 kilogram, whatever is your outgoing quantity, you can mention here. Like it is a chemical waste, so we are going to send entire quantity. हम इसको recycle नहीं कर सकते. So put here outgoing quantity also as 100 kilogram. Okay. So this is my entry document number 146. This waste generator generated this particular waste and they have generated 100 kilogram of quantity and they want to store it in the warehouse in the plant 3000 and you need 2 containers. This is number of containers. 2 containers are required to store this much of waste and other details like I told you we don't know, so we have to leave it blank. Right. So like that, we have to create an entry document and save the data. And whenever you want to change some details, अगर आपको कुछ change करना पड़ेगा, then you have to go to WAE02. Go to transaction code WAE02. If at all you want to change something, अगर कुछ data change करना है, you can go to WAE02. So here it is a disposal processing change, means we can change or edit the data. So if you know the document number, you can directly enter and you can display. जैसे कि our entry document number is 146. So you can enter that, press enter and it will immediately show. यहाँ पर immediately add हो जाएगा. Or if you don't remember the entry document number, then what to do? Then you can either select the date, from which date to which date you want to see the disposal, entry documents. By date wise also you can select the data. Let's say I will put here from 2001 or maybe let me put it as 2024. 2024 up to the date
today's date, press enter. Why it is not showing? Maybe already I have searched. Maybe that is the reason. Wait. Okay, let me try now. Okay, between this period, between 35/2024 and 35/2026, there is just one entry document. इसीलिए वो आपको डेटा नहीं दिखा रहा था, because between 2 years they have just created one entry document. वो भी हमने आज create किया. That is why it was not showing. Let me try one more time. From 2001 I will put and check. Document date. Okay, let me put from 2001 up to today's date. Okay, let me try this. Yeah, now you can see there are many documents. So between the period 2024 and 2026, they have not created any document. That is why it was not showing. But when you put the date as 2001, you can see that there are many entry documents. यहाँ पर बहुत सारे entry documents create हुए हैं. So like that, you can choose the date also if you want, and you can display the entry documents. Or if you want to see what are the entry documents as per the waste generator name, that is also possible. You can enter the waste generator name, and when you search, it will show only those entry documents from one waste generator. Like that, there are different ways by which you can search the data. Right. Now, let me again go back, because I want to only make changes in our entry document 146. So enter that entry document number. This is our entry document. Now if you want to change anything in this, it is possible. All you have to do is click on edit option, and you can change some of the data. Like mostly we can change the container name, number, okay, how much is the quantity, in which plant we have that waste. Only these things we can change. Even document date, if at all you want, document date you can change, and original material. But what you cannot change here is, you cannot change the waste generator detail, and you cannot change the waste name. ये दो चीज आप change नहीं कर सकते. You cannot edit this. We cannot edit this part of the data, but you can change the quantity related information, how many containers are required, unit of measurement, in which plant this material is existing, plant number you can change, document date you can change, even material, like from which material this waste is generated, even that you can change. But other things are fixed. You cannot change the generator details. Right. So here, if you want to change the quantity, let's say you want to make it as 200 kilogram, you can change it. And here also, outgoing quantity, you want to make it as 200 kilogram. Fine. You can change and again save the data. So this WAE02 is mainly used to edit any existing entry document. Okay, clear? And whatever data you enter here, that you can see in the detailed view. अगर आप यहाँ पे देखोगे, there is something called as detailed view. It will show all the information. Waste generation related data, storage related data, it will show, right? And some additional data also. If you want, you can maintain additional data like treatment, recoverability. Then we can also do the partner assignment for this particular entry document. So these details are, visible, and you can display them. Okay, clear? Any doubt in this, guys? Creating entry document, creating and editing entry document. Clear hai? No doubt in this. You can create an entry document.
यस सर, क्रिएट कर लेंगे। See, there is one more function I want to show. एक और चीज आप इसमें कर सकते हो. You can split this entry document into two parts. जो एक डॉक्यूमेंट है हमारा यहाँ पे 146, we can split that into two documents. How to do? Select that entry document और यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन है called as split document. So if you click on that, here you can actually divide the quantity. So first of all, yeah, you can select the waste. First select the waste. It is this. Okay, select the waste. Then you can split the quantity. अभी यहाँ पे 200 किलोग्राम है ना. Let's say I want to divide that equally into 100 kilogram each. So therefore, I can put here quantity as 100 kilogram and container I will put one. क्योंकि एक कंटेनर काफी है 100 किलोग्राम के लिए. So this also I will divide, and then the container, go to the container unit of measurement and select the measurement as kg per meter. Okay, here. प्लान नंबर तो वही रहेगा. वी आर नॉट गोइंग टू चेंज प्लान नंबर एंड ऑल. तो बस क्वांटिटी आप क्या कर सकते हो, इक्वली यू कैन डिवाइड, और उसका जो रिलेटेड डेटा है दैट यू कैन एंटर. ओके, सो आफ्टर दिस you can click here on the continue option. Okay, then click on transfer. तो इससे क्या होगा आप देख सकते हो. अर्लियर वी हैड ओनली 146, डॉक्यूमेंट नंबर 146. अभी क्या हुआ है, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू two parts, 147 and 148. Right. Now if I save this data, what will happen? Do you think this 146 will be there or it will be discarded? चलो इसको सेव करके देखते हैं. First we will save. So we have split this document 146 into two parts, 147 and 148. अभी हम क्या कर सकते हैं, we can again try to search this particular document. Let me again put 146. So this time it will say that we don't have a document 146. See, because that 146 document we have divided into two, and new document number is 147 and 148. That is why it is not shown. Now again you can go and enter the document number 147, then it will show. See, it is showing the document 147 जो आपका उसका क्वांटिटी है 100 किलोग्राम. Right, like that. If you want to divide the entry document into two parts, you can do that. You can divide it. Okay, so this is something again I wanted to show you. I hope it is clear. Entry document. Clear hai? Any doubt, guys? Please let me know. Because we have almost reached the end of waste management. Yeah. So last, there is one more document called as disposal document. Very important. In waste management, we have a disposal document which we have to generate, and we have to give a copy to the transporter and the disposer. And another document, we have to keep it with us. So to create such a disposal document, we use a transaction code WAM01. Okay, WAM01 will take you to the disposal document section. लेकिन यहाँ पे क्या है, before you create a disposal document, you have to select what type of disposal document it is, which one you want to create. That first you have to select. See, there are different disposal documents in different countries. Like for example, we have this Begleitschein to Begleitschein used in Germany. Then we have delivery note used again in some European country. Then we have generic and hazardous waste manifest. This is used in USA. And then we have a doc receipt. There are different types of disposal documents. Which one do you want to create? आप कौन सा create करना चाहते हैं?
that you have to select. So let me select as an example hazardous waste manifest. Okay, then click on continue. It will take you to create disposal document screen where you can create a disposal document. So actually we are creating a hazardous waste manifest which is used in USA. Hazardous waste manifest. So this has lot of tabs as you can see. We have status tab, generator, transporter, disposer, what waste we are going to dispose, other details, which is the DG regulation applicable and remarks. In each of these tabs we have to fill the data. Because your disposal document contains lot of data, who is the waste transporter, who is the waste disposer, all that information it will require. So we have to add all that information here in the disposal document. So let's start from the status tab. This is the first tab, status tab, where we have to enter the authority assigned number. Trans-regional authority assigned number and regional authority assigned number. Last time in theory I had told you, what is a trans-regional authority assigned number? And what is a regional authority assigned number? हमने डिस्कस किया था ना इसके बारे में. आई हैड टोल्ड यू क्या होता है ट्रांस रीजनल अथॉरिटी असाइन नंबर. Don't know. Trans-regional authority assigned number means it is also a authority assigned number, but when you want to transport your waste outside the state, जैसे कि from Karnataka state you want to send the waste to Maharashtra, for example. So when you are sending the waste like this to be disposed in other country, other state, then we have to take the permission from them, Maharashtra Pollution Control Board, and at the same time we have to get the authority assigned number. ये दोनों चाहिए. We have to take the permission from Maharashtra state and also we have to take the authority assigned number. Right? So what is that authority assigned number? It will be something like this. You see here G-173-83839. It will be something like this. Or if you want to change this number, you can change it. This is an example for authority assigned number. Similarly, regional authority assigned number means when you want to dispose the waste within the same state. Like if you have facility in Karnataka state, we don't have to transport outside of Karnataka. In the same state, you can dispose the waste. Right? So in such a case, you don't need, you just need the authority assigned number from one state. So that number will also be similar to this. As you can see, it will be a combination of a letter and numbers. And this is how authority assigned number looks like. Right? So enter these two numbers in the status tab. Don't change the status, it will be new, but we have to only enter the authority assigned number. Next, after this, go to the second tab called generator tab. What happens in the generator tab? We have to select the waste generator who is generating waste. See, in a disposal document, we have to enter all the three details. Who is the waste generator, who is the waste transporter and disposer. All three we have to add. So therefore, select the waste generator. Anyone already existing waste generator you can select. Like maybe this ID is 3000. He is a waste generator. Now we have two things here. One is generator number and regional generator ID. See, both are same. You can just enter the generator number. You don't have to add a generator ID. So generator number means again it is the authority assigned number. So for this waste generator, what is the authority assigned number given by the government? So it is something like this, G1702191. You can add that authority assigned number.
Next, generator ID will also be same, so you don't have to enter, you can just leave it. No need to add this number here. And even role dependent name. Role dependent name means it is the company name. Company name is called as the role dependent name. So again, we don't need it, it will be auto-filled. So you can leave that as well. And then here we have something called as relevant for WLCA. Here we have something called as relevant for WLCA. So what is WLCA? WLCA stands for Waste Life Cycle Analysis. Okay, you can just write it somewhere. WLCA actually means Waste Life Cycle Analysis. But what is waste life cycle analysis? See, if you are generating waste, you should try to minimize the waste generation. आपको कुछ भी करके ना waste generation को थोड़ा कम करना पड़ेगा. You can either like recycle आप करोगे तो भी चलेगा. Otherwise, you can try to minimize the waste generation by using the latest technology or latest machinery. You do whatever is required, but try to reduce the waste generation. Right? So they will do this analysis. WLCA means why the waste is getting generated, from where the waste is getting generated, how to reduce the waste. That study is conducted in WLCA. So for this particular waste generator that I have added, if that is applicable, then you can select this option relevant for WLCA. Lot of companies do that. कुछ companies water को treatment करके they will use it for gardening या फिर for other uses they will use it. So we have to try to avoid waste generation. पहले तो आप avoid करो waste generation को stop करने के लिए. But if it is not possible, then you should find out some way how we can recycle that waste. So that we are mentioning here, it is relevant for WLCA. Next comes handover date. ये भी मैंने आपको बताया था in theory. What is a handover date? What is handover date? Handover date is a date on which we are handing over the waste and the disposal document to the waste transporter. Handover date is the date on which we are handing over waste and disposal document to the waste transporter. So you can add that date, maybe today's date you can add as the handover date. Authorized signatory, automatically it will get added. We don't have to add anything here. Okay, it will be added automatically. Next, after that, we have partner order number. Means it is a document number. We are going to hand over the waste to the waste transporter. So what is the purchase order number we have generated for him? That purchase order number we have to add. So it can be something like this as an example. Okay, some number, document number related to the purchase order. Again, go to the right hand side. Okay, this description will be added again automatically. We don't have to add. Now, if you press enter, the remaining details will be added. So this generator which I have selected, no, that company name or role dependent name is, one second, the role dependent name is IDs. And the authorized signatory for this particular waste generator is Haley. This is the name of the person responsible from the generator side. And then I also told you the partner type description will be added. He is a waste generator, so that is why here we can see it is showing as waste generator. So this is one part. We have added the details of the waste generator. Next, same way we have to add the transporter details. So who is the transporter? Who will transport the waste for the company? That we have to select. We have just one transporter, so we can just select that. ID is 3065. Is the transporter. And even transporter will have the authority assigned number. Like I told you, authority assigned number is given both for the waste generator, waste transporter as well as disposer. So all three business partners will have the authority assigned number. So select here
what is the authority assigned number for this transporter. Okay, so this is the authority assigned number. You can double click and select that. And also see, again we have here generate the regional transport ID. It is not required because it will be both same. Let me show you. It will be the same number what we are seeing as a authority assigned number. So see, if you compare it, it is the same number. Therefore, what will happen? One of the number will get cancelled, or one of the number will be rejected. So no need to add. One is enough. You can just add a transportation number. That is enough. Okay, then come to the right hand side. We have the takeover date. What is the takeover date? What is takeover date? Takeover date is a date Well, on which on which date the waste generation has been taken from for the transport, sir? okay, that will tell even this handover date, no? That is also same thing, no? Yeah, that could be same or different also sometimes. Yeah, it can be same or different, but takeover date is a date on which the transporter takes over the waste and disposal document from the waste generator. Takeover date is a date on which waste transporter takes over the waste and the disposal document from the generator. It can be same date. I can put 30th also, because if today they come to take the waste, today itself I will hand over the waste and the transporter will take over the waste. So it cannot be too different, no, it can be same. So that is why I will put here 30th of May. Again we have that purchase order number which I told you. So we have to enter the purchase order number, and not only that, we also have the license plate number. Whichever vehicle comes, if you know the license plate number of that vehicle, you can enter something like this as an example. License plate number, not only that, even driver's name you can add.
Yes, sir. Hello, sir. Yes, sir. Yeah, shall we continue? Okay. Yeah, so we have entered some transporter details, like we have to enter the takeover date, then what is the license plate number of that vehicle which has come to collect the waste, and what is the driver name. All these things we can maintain. Okay, and yeah, apart from that, the signatory name will come automatically, and what is the company name, that also will come automatically along with the description. So all I have to do is just press enter, and the other details will be added. So here, this is the company name, or sorry, description called transporter, and then we have the signatory as Orbinson, and the company name is Central Logistics. So that will be added automatically. You don't have to worry about that. And by the way, see one more thing. Here I had entered even the regional transport ID, right? This also I had entered, and the same authority assigned number again I had entered. So because both are same, one will get eliminated and we will be left only with the original transport number. So that is why I tell, either you maintain one, that is enough, no need to add both the numbers. Okay, this is your waste transporter detail. Similarly, also select the disposer, because in a disposal document all the three data we need: generator, transporter and disposer. So of course we have to add disposer detail. So in disposer we have these four business partners. Whichever you feel is applicable here, you can select that waste disposal. For example, 3015. Okay, select 3015 as the waste disposer, and even he will have a authority assigned number called as disposer number. Select that. This is the authority assigned number for waste disposer. So transporter, You can select that. No need to add a regional disposer ID because ट्रांसपोर्टर ने already it जब is the same ये number. So I डिस्पोजर will ग्रुप show को you. मतलब दे दिया Anyways, और उन्होंने वो it ले is the लिया, same number, सब कर लिया, 1969. So you can maintain just one of them. वेस्ट को जब If you ले add लिया disposer सर ले number, लिया that is मीन्स enough. नहीं इसमें Next, again come to the right वही hand side. वही We डेट have मतलब here जैसे भी also ट्रांसपोर्टर 2 relevant दिन for बाद WLCA. हैंड ओवर I करेगा ना told you डिस्पोजर WLCA is nothing but वो वाली डेट waste life cycle analysis. Okay,
and even the waste disposal company can perform this analysis, because even they can do that. They can come with a plan how they can recycle the waste, or at least how to neutralize the waste. Even they can conduct an analysis. So therefore, if that is the case, you can add the option here called relevant for WLCA. This is applicable only for two business partners. It is applicable for waste generator or waste disposal. As far as transporter is concerned, we don't have that option, because their job is only to transport the waste. They don't do analysis and all. That is not their job. So therefore, only for generator and the disposer, we have this option called relevant for WLCA. Okay. Next, go to the select that option relevant for WLCA, and then go to the acceptance date. So what is the acceptance date? What is acceptance date? I told you what is a handover date, takeover date, and the last date is a acceptance date. What is an acceptance date? नहीं, transporter, okay. उसको क्या बोलते हैं? हम्म 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 हाँ हाँ बिल्कुल हाँ. तो पहले क्या हुआ, फर्स्ट टाइम द ट्रांसपोर्टर एक्चुअली टुक द वेस्ट फ्रॉम द जनरेटर. तो जनरेटर से पहली बार क्या हुआ, ट्रांसपोर्टर ने वेस्ट को लिया. लेने के बाद नेक्स्ट व्हाट हैपेंड, ही वेंट टू द डिस्पोजल साइट. हो सकता है वो 100 किलोमीटर हो या 200 किलोमीटर हो, जितनी भी दूर हो, he will take that waste to the waste disposal site and there he will hand over again. तो वहां पे क्या होता है, आपका जो वेस्ट डिस्पोजल कंपनी है ना, he will accept the waste from transporter. Not only the waste, they will accept waste as well as the disposal document, right? So that date is called as a acceptance date. So it may not be same. हो सकता है कल पहुंचे या 2 दिन के बाद पहुंचे. It can be a later date. So either I can put 31st or I can put 1st. क्योंकि ये बाद में आता है, right? First he has to transport करने के बाद वो जाके हैंड ओवर करेगा. So it takes some time. काफी टाइम लेता है. So that is an acceptance date. Next, again here also we have the purchase order. You can enter the purchase order for this particular business partner or contractor, and yeah, that's it. So now if you press enter, the other details will be added, like description, the authorized signatory for the disposal, and company name. Yeah, this is the company name. So this is the detail we have entered for a waste disposal. Total 3 details we have added: generator, transporter details, and disposal details. Next, we have to enter what type of waste they are handling. Okay, what type of waste they are actually handling. So remember one thing, when you select the waste here, it should be common for both generator, transporter and disposer. अब जो भी वेस्ट यहाँ पे एंटर करोगे, वो वेस्ट ना जनरेटर उसको जनरेट करना चाहिए, transporter should transport that same waste, and disposer should dispose that waste. So you have to be very careful here. Sometimes what will happen, you will select some incorrect waste. जैसे कि समझ लो अगर आप P182 वेस्ट अगर सेलेक्ट कर लिया, इट इज एक्चुअली इनकरेक्ट. दिस वेस्ट इज नॉट जनरेटेड, दिस वेस्ट इज नॉट ट्रांसपोर्टेड बाय द ट्रांसपोर्टर, और जो आपका वेस्ट डिस्पोजर है वो भी इस वेस्ट को डिस्पोज नहीं करता. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. अदरवाइज व्हाट विल हैपन, आई विल जस्ट शो यू दैट. अभी देखो, आई विल पुट हियर 500 किलोग्राम we are sending out for disposal. Total 500 quantity will be disposed, right? And then we have how many containers are required. Again, let's say we need 2 containers.
Okay, and then what is it? Container category. Container category also you can add here. So what type of container they are? They can be either reassembly containers or containers used for recycling facility or containers used for landfilling. So whichever is the applicable option here, you select that. Maybe like let's say landfilling. The container type is or the container category is landfilling. Those containers we are going to use which are used for the landfilling purpose. Okay, so we have added all the data. Now what will happen, because the waste name is incorrect, मैंने जो यहाँ पे waste का नाम select किया है वो incorrect है, it's not the correct one. So if I press enter, I will get a error message actually. See here, क्या दिखा रहा है? No waste from a disposal channel for generator IDs 3000 exists. मतलब जो मैंने waste यहाँ पे select किया है, it is a incorrect data, ये गलत है. How to check? अच्छा, कैसे check करेंगे हम? How to check whether it is correct or not? कहाँ पे जाके चेक करेंगे? जो मैंने वेस्ट यहाँ पे जो सेलेक्ट किया है ये करेक्ट वेस्ट है कि नहीं है, कहाँ पे चेक कर सकते हैं? इफ यू हैव अंडरस्टूड सो फार देन इट शुड बी इजी, आप इसका आंसर दे सकते हैं. व्हाट इज दिस वार्निंग मैसेज? ये बता रहा है जो आपने वेस्ट सेलेक्ट किया है ना, दैट वेस्ट इज नॉट बिलोंगिंग टू दिस जनरेटर, ये बता रहा है. सो हाउ टू चेक? कैसे चेक करेंगे आप? सर WA21. वी कैन ओपन दैट वेस्ट जनरेटर, जो भी वेस्ट जनरेटर है हम इसको ओपन करेंगे एंड विल सी व्हाट टाइप ऑफ वेस्ट दे आर हैंडलिंग. वेरी सिंपल, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने का नहीं है. सी आई विल गो टू WAA03. ठीक है, हियर आई विल पुट दैट वेस्ट जनरेटर नेम. ओके, ID is 3000 and if I press enter it will take me inside. तो वेस्ट जनरेशन में जाके ना मैं चेक कर सकता हूं कौन सा वेस्ट ये लोग जनरेट कर रहे हैं. कैन यू फाइंड एनीथिंग रिलेटेड टू P182? यहाँ पे है वो वेस्ट. दीज आर दी 3 टाइप्स ऑफ वेस्ट दिस जनरेटर इज जनरेटिंग. इसमें से कोई भी एक है जो यहाँ मैच कर रहा है? Is it matching with the waste that I have entered? देखो ये P182 है, but the waste generator is generating some other waste. वो जो generate कर रहा है वो तो अलग ही waste है. So it is not matching. That is why we are getting that error. So you have to enter any of the 3 waste. या तो आप ये ऐड कर सकते हैं और you can add this or the third one. बस ये तीनों waste में से कोई भी आप ऐड कर सकते हो. You cannot add P182. वो तो कोई और जनरेटर जनरेट कर रहा है, नॉट दिस ID 3000. सो क्या करना पड़ेगा हमको? वी हैव टू चेंज द वेस्ट. अच्छा, सेम थिंग इज अप्लीकेबल इवन फॉर ट्रांसपोर्टर एंड डिस्पोजल. कैन यू टेल मी व्हाट इज द ट्रांजैक्शन कोड फॉर वेस्ट ट्रांसपोर्टर डिस्प्ले? वेस्ट ट्रांसपोर्टर डिस्प्ले के लिए क्या है ट्रांजैक्शन कोड? Hello, are you there? WAA21. Okay, this is display transporter. अच्छा चलो कम से कम ये देखते हैं whether this transporter is transporting that waste or not. मैंने तो P182 का ऐड किया है ना, ये ट्रांसपोर्टर क्या सच में वो वेस्ट को ट्रांसपोर्ट कर रहा है? वो चेक करना पड़ेगा, राइट? सो गो टू वेस्ट ट्रांसपोर्ट. यहाँ पे फिर से आप देख सकते हो वी डोंट हैव P182. ये जो ट्रांसपोर्टर ट्रांसपोर्ट कर रहा है ना, इट इज दिस IDs WA0001, 0002 एंड 0003. यहाँ कहाँ है P182? वी डोंट हैव दैट. तो ये गलत है. मैंने जो वेस्ट यहाँ पे सेलेक्ट किया है दैट इज ए इनकरेक्ट वेस्ट, ये गलत है.
व्हाट अबाउट डिस्पोजर? अच्छा चलो कम से कम डिस्पोजर में जाके चेक करते हैं जो डिस्पोज हो रहा है क्या वही वेस्ट डिस्पोज हो रहा है या कुछ और डिस्पोज हो रहा है. सो व्हाट इज द ट्रांजैक्शन कोड टू डिस्प्ले डिस्पोजर? WAA 12. Okay, WAA 12. ओके, सेलेक्ट दी वेस्ट डिस्पोजर 3015 क्योंकि वो मैंने वहां पे ऐड किया है इन दी डिस्पोजल डॉक्यूमेंट. अच्छा चलो चेक करते हैं वेस्ट डिस्पोजर कौन सा वेस्ट डिस्पोज कर रहा है. गो टू वेस्ट डिस्पोजल टैब और दोबारा यहाँ पे देखो वी हैव IDs WA 0001, 0002 एंड 0003. कहाँ है P182? तीनों जगह पे हमने चेक किया इन वेस्ट जनरेटर, इन वेस्ट ट्रांसपोर्टर एज वेल एज इन डिस्पोजर. नन ऑफ देम आर हैंडलिंग P182. दे आर ऑल हैंडलिंग दिस. सो दैट इज व्हाई इट इज शोइंग एरर. तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? व्हाट शुड आई डू देन? I should choose the correct waste. It's not this P182 नहीं है. We have to choose some other. Let's see, select कर सकता हूँ कि नहीं. I don't know. Let me try. नहीं, select नहीं हो रहा. Okay, let me try to delete. Delete भी नहीं हो रहा. That is why I normally don't show. मैं normally नहीं दिखाता हूँ क्योंकि एक बार गलत वेस्ट ऐड कर दिया ना तो उसको दोबारा चेंज करना मुश्किल है. इट इज वेरी डिफिकल्ट. नहीं तो क्या होगा, पहले से हमको ये पूरा डिटेल डालना पड़ेगा. ओके, लेट्स डू वन थिंग. मैं वही करता हूं बिकॉज वी डोंट हैव एनी ऑप्शन. पहले से पूरा डिटेल डालना पड़ेगा. सो व्हाट टू डू? क्लिक हियर ऑन कैंसल. पहले से क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल डायरेक्टली. ID is W0014. Anyways, no problem. We'll add one more time. Hazardous waste manifest. Okay, add the regional authority assigned number and trans-regional authority assigned number. Okay, then go to generator. Generator detail डालना पड़ेगा. We don't have any other option. हमको ये करना ही है. Okay, relevant for WLCA. Handover date was 35. और क्या है? Partner order number 1048. Yeah, that's it. Go to the second tab. Go to transporter. In transporter also select the waste transporter. ID is 3065. Transporter number is the authority assigned number. And then go to takeover date. Add a takeover date. And vehicle number also we had mentioned. First partner order number. And then license plate number. And driver name. Right? Again press enter. Go and add details for disposal. Again disposal also you have to select correctly. This is the authority assigned number for disposal. Next you have select the relevant for WLCA option. Then add the acceptance date as 1/6. Then press enter. यहाँ तक हमने किया था. It's okay. We have to repeat. No problem. Now let's go to waste. अच्छा, now tell me what waste should I select? Which waste should I select now? P182? Which waste should I select? Yeah, it can be 0001 or it can be 0002 or 0003 because all these three are generated by the generator, transported and disposed. So any one I can select. Let me select the first one. Outgoing quantity I will keep same 500 tons. Sorry, kilogram. Here also 500 kilogram. Right? So this is about the waste related data that I have entered in the waste tab. Next, after that, we have to go to waste code.
In waste code, we don't have to enter anything. Depending on which waste you have selected, the waste code will be automatically added. ये automatically add हो जाएगा, आपको add करने की जरूरत नहीं है. Depending on the waste selected, the waste code will be added here. Next, go to other details. In other details, we have to give some information about that waste material, and then we can add some note on handling. So for example, I can say that this is a hazardous waste, hazardous chemical waste generated from the chemical process. It has to be handled with care. क्या ऐसा कुछ? Or you can say, yeah, fine, this is okay. Next, add a note on handling. So in handling, we can say that ensure that the hazardous waste handling policy of the company is followed strictly by all the waste management business partners. By the waste management business partners. Okay, like that you can add a note. So we have added some information about that material, and also we are saying while you are handling that waste, we have to follow the company policy. Right? So these two things you need to add here in the details. Next, let's go to dangerous goods tab. What is this dangerous goods tab? Dangerous goods tab will give you, we have to enter which is the DG regulation we are following. See, in some countries, when you are transporting hazardous waste, you have to follow the DG regulation also. We have to mention exactly which DG regulation is applicable when we are transporting that waste. So most of the waste, as you know, is transported by roadways. So you can add a roadway related regulation here. For example, which DG regulation we can add? We can add ADR. ADR is also a roadway related DG regulation followed in Europe. So ADR you can add, or Asia Road, or any of these other, China Dangerous Good, CFR Road, because most of the waste is transported by roadways. So let me add ADR. Okay, add ADR, and then go to the last tab called remarks. So what happens in the remarks tab? We have to add some additional information. If at all, if there is any additional information, we can add it. For example, I will add here under deviations. It was observed that the contractors do not use PPEs while handling hazardous waste. Okay, this is your observation or deviation that you have observed regarding the handling of hazardous waste. You are writing here. It was observed that the contractors do not use PPEs while handling hazardous waste. And in the internal remarks section, you can say, please follow the hazardous waste handling procedure. Please follow the hazardous waste handling procedure and ensure that the contractor employees use necessary PPEs. Okay, like that. This is an internal remark. So we have observed some deviation. So according to that deviation, we are saying the employees have to use the PPE because they were not using PPE. So we are telling that they have to use the PPE as per the procedure. Okay, like that. Add a remark. So we have added all the data starting from status tab,
we have added the generator details, transporter details and disposer details. Also we have selected which waste we have generated, how much quantity. Waste code will be added automatically, no problem with that. And then we have other details like material description we can add, and notes on handling we can add. Similarly, we have dangerous goods, which DG regulation you have to follow, that also you can mention here if applicable. And finally, we have the remarks section where we can maintain some remarks related to any deviation you have observed, and you can also add the internal remark. Right? So these details we have to add in a disposal document, very lengthy process. Now after adding all this, save the data. Okay, and the disposal document number will be given like 114. Now what we have to do is we have to change the status. Before we can generate a disposal document, we have to change the status. Currently the status of this disposal document is new. We can change it to let's say confirm your entries. First we can confirm the entries. No, I think we have to first go and select this option. Data complete or complete data. Yeah, see here also the status will change to data complete. Next we have to confirm the entries. Next go to this option called confirm and you can confirm the entries. So again what will happen, it will change here. Okay, whatever details you have added, you are confirming. Those are the correct details. So like that you have to change the status, and then finally we can generate this disposal document. To do that, go to this option called print preview, click on that, and the disposal document will be generated here. You can go and check it out. It will be generated in the MS Word format. So you can select this option here and it will show you the details of that disposal document, right? So it will look something like this. If I click on allow, it will show you exactly how the disposal document looks like, okay, in the MS Word format. This is your disposal document. This is just an example document, so not exactly 100% accurate, but fine. It has almost all the data which we have entered. Almost all the data. Okay, so it has all the details like who is the waste generator, who is the waste transporter, disposer, and not only that, it also contains the authority assigned number and which waste we are actually disposing, what is the waste type, and what is the quantity of the waste, right? And the note also you can see here, whatever note I maintained, that note will also be displayed here. So I had maintained the note that we are this particular hazardous waste has been generated from the chemical process. So that waste related data also you can see. It's not 100%. Whatever data we have created, it's not copying all the data, but at least some basic things it is able to display. Right? So this is a example hazardous waste manifest which is used in USA. Now you can take a printout of this document and you can share it with the waste transporter and also with the waste disposer. Directly you can take a printout or you can save the soft copy, whatever is appropriate, you can do that. Okay, clear? So you will be able to create a disposal document, or any doubt in this so far? Clear. Okay, so let me close this. This is your disposal document, which is nothing but it's a hazardous waste manifest. Right, like that you have to create and you can generate the disposal document. So try this, try to create a disposal document and see for yourself.
whether you are entering the correct data or not, whether you are able to generate that report or not. You can please check it once. And there is also one more transaction code I will show you, WAM03. WAM03 will allow you to display the disposal documents. Okay, for example, here all these are different disposal documents. As you know, I told you BGS is used in Germany, then we have delivery note, hazardous waste manifest. All these different types of disposal documents are there. Already I have shown you how the hazardous waste manifest looks like. I have shown you. Let's see how the BGS document looks like. This is used in Germany. I will just show you how the documents look like. So we can go to, there are different reports in different status. I will go to the confirmed status here. Okay, and inside we have two documents. So let me select the first one and I will try to generate that document. This is, mind you, this is not hazardous waste manifest. It is a BGS document or German waste manifest. So click on print preview. Okay, just like before, it will generate the report in your report information system, where you can click on the report icon and you can display the document. So let me do that. Click on the icon that will generate the report. I think this will come in PDF format mostly. No, this is also MS Word. Okay. Right, so it is completely different from what we have seen in the hazardous waste manifest. This is completely different. The format followed in Germany is a different one. And this is called as a German waste manifest. And they follow this in Germany whenever they want to dispose the waste. Most of the information will be in German language, as you can see. If you want to create a German waste manifest, that is also possible. When you go to WAM01, please select this particular document name, Begleitchen, and you can create a disposal document for Germany. Okay, clear guys? So this is another example, another format of disposal document I am showing you, called as Begleitchen, which is used in Germany. So you can take a printout. When you create a document, you can take a printout of the document and you can share it with the transporter as well as the disposer. Right? Clear? Shall I close this? So these are some examples of disposal documents. One, we have seen how to create hazardous waste manifest we created. One more example I have shown you regarding the German waste manifest. सर आप www चेक करेंगे क्या सिस्टम में? While creating, again it is your choice. See, no matter what kind of disposal document सर आप you are मॉर्निंग में creating, नहीं तो the सिस्टम में basic चेक data कर will लीजिए not है change. मतलब वो प्रोसेस होगा भी The कि format नहीं may तो be फिर different, but अभी whatever मैं डेस्कटॉप data में we जा are करके maintaining, लॉग it इन will be करूंगी अभी almost आपको same. चेक करना है Like तो we चेक have कर to लीजिए. enter generator details, transporter details, disposer details, what waste we are going to dispose, how much quantity we are going to dispose. This much at least will be common. वही कल ही एक्सप्लेन की In बात नहीं every तो kind फिर of कल मतलब disposal आप टाइम document, लेंगे these और फिर basic नहीं details हुआ will be तो फिर common. नहीं तो फिर But मॉर्निंग में some यदि आपको other minute सिस्टम में चेक differences करना है will तो be मॉर्निंग there. में सिस्टम में चेक कर Maybe लेते with हैं. respect to the authority assigned number, it will be different. Or whichever is the applicable DG सर मैं लॉग regulation, आउट होती that हूँ may अभी be मुझे ये different. लैपटॉप में डेस्कटॉप में. But other than that, ओके it is सर. all same. Right? So that's what it is I wanted to take up today. We have completed waste management, but there are some doubts like, you told how to add a new phrase, because phrases are not available. Phrases are not हाँ सर available कर for लो. rhythm, frequency and cycle, and also not available for recoverability, सर काल avoidability and disposal process. So just give me some time, I will work around on my system. I will try to create those phrases and if possible I will record it. So that when I share, at least you can go through हाँ that सर video वो तो कर recording and you देती will है. be able to create.
हाँ सर, वो क्या है ना, जब भी वो एंटर fine. करते हो तो डेटा So this बहुत is your देर waste बाद वो management, एंट्री होता है। मैंने and also anything लास्ट else टाइम is there? नहीं, कुछ नहीं होता, बहुत 3-4 बार एंट्री Anything करने else के is बाद there ही वो from my होता end? है। आज भी ओएस जनरेटर में भी वैसा ही हो रहा था। चेक करेंगे कैसे? हाँ, WWI tomorrow will see that. कल। हाँ सर, डेटा है, स्लो है मैं डेटा। डेस्कटॉप पे जाके चेक करें। हाँ ठीक है, आप ये काम करो, यू लॉग इन एंड शेयर इफ हाँ पॉसिबल। सर, मुझे आप बोल लॉग रहे इन थे कि करके ना मैंने तो डेस्कटॉप 2 पे बार एक बार दिया मुझे है। करो, अगर हो रहा है तो जितना मैं दिन कल चलेगा एक्सप्लेन क्लास करूंगा, उतना दिन तो क्योंकि देना है ना। उसमें हाँ हाँ, हाँ, वो उस दिन से ही मेरे पास पैसा ही मांग रहे थे, नहीं मैंने कोई पैसे बात तो नहीं, मैंने अभी दे दिया वैसे भी ऑलरेडी। हम कनेक्टेड हैं, आप एक बार बोले देखो, नहीं, लॉग फिर इन से देना करके होगा। शेयर करो। बोले वो क्या बात है। हाँ डन डन चलेगा, ओके। हाँ हाँ सर, फ्री तो हो। ठीक है। एनी अदर डाउट्स, एनीथिंग? सोमा, योर सिस्टम इज वर्किंग नाउ? आपका सर्वर काम कर रहा है? सर वो हमने बात किया था ना एक फोल्डर के लिए फॉर ऑल द हाँ, आपने ट्राई रिक्वायरमेंट्स किया एंड कुछ? कब मिला आपको सर्वर? कल मिला था, अच्छा। ठीक है रिस्क सर। एंड असेसमेंट या सर मैं जो भी आपसे आप पूछ रही प्रैक्टिस थी कर ना, रहे थे, ये आप ट्राई जैसे कि करो एक आपने बार, मुझे चेक अभी मेरा करो वो सैप उसमें डेटा है क्रेडेंशियल्स नहीं है। एक्सपायर हो गया था, तो आप मुझे एक नया वाला क्रेडेंशियल शेयर किया था समझ में 3 आया मई को। कुछ? तो सर अभी वो कितने टाइम तक फंक्शनल रहेगा? बिकॉज एक बार ये अभी जब आप हम लोगों को सिखा रहे हाँ थे वो तब पहले, एक एक बार किया है, बट अच्छा, अभी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस तब तो तक क्या नहीं वो बैठा है। प्रोसेस होता है, साउंड उसके आता लिए है? ऐसे भी तो हम लोगों को लगे, मतलब मुझे लगेगा टू अच्छा प्रैक्टिस फर्दर। तो अभी कितने टाइम तक वो एक्टिव रहेगा? अच्छा अच्छा, अच्छा। लेकिन डेटा तो ओके, दिखा रहा एंड है सर ना, उसके डेटा तो बाद, है ना सिस्टम में? सॉरी सर। थोड़ा स्लो है। हाँ हाँ सर, चलो अभी तो कम काम से कर कम रहा है। कुछ तो मिला, अदरवाइज वो लोग नहीं देते ठीक। सर्वर। सर उसके, हाँ 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 सर बताते हैं। हम्म, हाँ हाँ सर। हाँ हाँ, Sir, इसलिए मैंने सर ई मैसेज डबल किया था सी वन। ग्रुप में। हम्म, ठीक है सर। अच्छा। हाँ, ओके, थैंक यू सर। चलो प्रॉब्लम नहीं है, आपका भी क्या अभी बेसिक डेटा एंड टूल्स sir, बचा अभी है ना? ये जो हाँ EHS है ना मैं सर, कर दूंगा, आप right वीकडेज now में we फ्री are in रहोगे classical. सुबह? So बाहर अभी companies में they are अच्छा using ठीक है, HANA मैं or आपको still मैसेज they करता are in हूँ, आप उस टाइम पे ECC ज्वाइन version, sir. करो। हम्म, Okay. हाँ कुछ हो गया? हाँ हाँ याद है। Okay. सॉरी, मैं इस हफ्ता थोड़ा बिजी था, आई एम सॉरी, मैं वो कर नहीं पाया, बट आई विल शेयर इट। मुझे बस अब थोड़ा टाइम दो, आई विल डू इट। हाँ Sir, it means like the complete the components, सभी the modules, अच्छा, everything is हम्म completely changed to S/4HANA or there is still in transition period? हम्म हम्म Okay. हम्म 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 वो चेक करना पड़ेगा खुशबू, उसका वैलिडिटी कब से है वो चेक करना पड़ेगा। अभी तो चल रहा है ना? नो इट इज वर्किंग, अभी तो काम कर Okay, रहा sir. है ना? अच्छा अच्छा, यूजर यूजर आईडी क्या है उसका खुशबू, थोड़ा बताएंगे? यूजर आईडी, हम्म
ECC1, अच्छा ठीक है, मैं चेक करता हूँ। जब तक यूज हो रहा है आप यूज करो, अगर बाद में कुछ स्टॉप होता है तो मैं प्रोवाइड करता हूँ, मैं चेक करता हूँ। या हम्म हम्म It depends on the company, Shiva. Most of your oil and gas, pharma, and chemical industry, they are still using ECC. Hmm. But some companies like construction or manufacturing, where they need only incident accident management, those companies are using S4HANA. Some are already done, some are yet to migrate. Hmm. But if you know ECC, that is enough. You don't have, it's not mandatory. Nobody is asking that you have to know S4 HANA only. It's not like that. Hello, Sonia, are you there? Sonia, are you there? Hello? I don't know whether she can hear or not.
Or if other people want to leave, you can please leave. I will check with her if the system is working. If WWI is working, then we can connect tomorrow and we'll continue. Anyways, I think she is sharing the screen. Let's check out. But I cannot hear her. See, it's not. She's not able to unmute. I do it from. Yeah, let me drop a message. हेलो. हाँ, मैं मैसेज कर रहा हूँ. देखो चैट बॉक्स में अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ से आपको इंस्ट्रक्शन भेज रहा हूँ. हम्म. हम्म. हाँ हाँ, CG42. हाँ वही है. बैक क्यों गए? वही है. ओके, गो टू. एक मिनट. हाँ, मैं देखता हूँ. नहीं, आप क्या करो, ऊपर जाओ. गो बैक. नहीं 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 नहीं. एक मिनट. इसको क्लोज करो, ये छोटा वाला स्क्रीन. इसको क्लोज करो, ये जो लिस्ट है ना, ये लिस्ट को क्लोज करो. हाँ. ओके, अब नाउ प्रेस एंटर. अच्छा, ये आपका लिस्ट है. नाउ गो टू CHMSDS एग्जाम्पल. ऊपर से आई थिंक फोर्थ या फिफ्थ CHMSDS एग्जाम्पल. सेलेक्ट दैट एंटायर रो. पूरा रो आप सेलेक्ट करो. डबल क्लिक नहीं. गो बैक. हाँ, ठीक है ठीक है. नाउ ये अभी इसका स्टेटस रिलीज्ड है ना, सो यू हैव टू क्लिक ऑन कैंसिल रिलीज. हाँ. यस. ओके, अभी क्या करो, ऊपर देखो एडिट रिपोर्ट टेम्पलेट लिखा है ना, उसके नीचे से फोर्थ ऑप्शन डॉक्यूमेंट बोल के रहेगा. नहीं, वो नहीं, उसके ऊपर. उसके ऊपर. हाँ, फोर्थ फोर्थ. लेफ्ट, उसका लेफ्ट. हाँ. यस, क्लिक ऑन दैट.
ओके, ये मैसेज आ रहा है ना, आपको क्या करना पड़ेगा, मेनू ऑप्शंस में यूटिलिटीज है ना, गो टू यूटिलिटीज सबसे टॉप में, और ऊपर ऊपर, हाँ नेक्स्ट, राइट, राइट साइड, राइट साइड, राइट साइड, यूटिलिटीज, और नेक्स्ट, हाँ, रीसेट फ्रंट एंड। ओके, आप दोबारा डॉक्यूमेंट में जाने का ट्राई करो, क्लिक ऑन द फोर्थ ऑप्शन। हाँ, यस, हेलो। नहीं ना, इसमें भी बाहर ही आ रहा है, देखो, इट्स ए डॉक्यूमेंट। ये आपका कौन सा है, विंडोज 10 है? नहीं ना, इसमें भी बाहर ही आ रहा है, आपका सर्वर कहीं पे है और आपका टेम्पलेट कहीं पे आ रहा है। नहीं, ये भी सपोर्ट नहीं कर रहा। हम्म। ओके, नहीं नहीं, ये भी नहीं कर रहा। तो आपको वही रिकॉर्डिंग के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ेगा, जो मैंने रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ शेयर किया है ना, यू हैव टू यूज दैट, और कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, अगर विंडोज 8, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने देखा था विंडोज 10 में भी ओपन हो रहा था, लेकिन आपके सिस्टम में क्यों ओपन नहीं हो रहा, आई डोंट नो। लेकिन अगर विंडोज 8 है, देन ऑल्सो वी कैन ट्राई, वर्क होता है पुराने वर्जन में। हाँ नहीं, ये भी एज ए डॉक्यूमेंट ओपन हो रहा है, टेम्पलेट। ठीक है, तो आपको और कोई ऑप्शन नहीं है, जो मैंने रिकॉर्डिंग शेयर किया था वो आप जाकर वो चेक करो, मैंने क्लियरली उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। हम्म। हाँ हाँ बिल्कुल, आप मुझे मैसेज करो, कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है, आपको हेल्प चाहिए, यू प्लीज यू कैन कांटेक्ट मी। या इट इज फॉर एवरीबडी, सब लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है या आप कुछ डाउट है, तो आप मुझे प्लीज मैसेज कर सकते हो, दिस इज फॉर एवरीवन। हम्म। थैंक यू, नो प्रॉब्लम सोनिया, बीच में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। हम्म। अच्छा। हम्म। अच्छा। अच्छा, डेफिनेटली डेफिनेटली, आप इसमें करियर बना सकते हो, जो मैंने मटेरियल शेयर किया है ना, उसको स्टडी करो, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो सिस्टम पे, आई थिंक दैट इज मोर देन एनफ, आप अप्लाई कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, वैसे भी गवर्नमेंट जॉब कौन छोड़ना चाहेगा। हाँ। अच्छा अच्छा। नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट आप अपग्रेड तो कर सकते हो, कुछ आईटी स्किल सीखा है आपने, आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं यूज होगा जरूर। हम्म। ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ। ओके गाइस, सो आई थिंक इवन ऑन हर सिस्टम इट्स नॉट हैपनिंग अनफॉर्चुनेटली। मैं ये भी आपको सिखाना चाहता था, आई ट्राइड लॉट ऑफ थिंग्स, बट इट्स नॉट हैपनिंग। सो ओनली ऑप्शन इज, जो मैंने आपको ओल्ड रिकॉर्डिंग शेयर किया है, आप उसको एक बार रेफर करो, उसमें मैंने क्लीनली एक्सप्लेन किया है, मैंने जनरेट भी किया था लेबल्स एज वेल एज रिपोर्ट्स, तो वो आप एक बार देखोगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा।
बट अदरवाइज अगर किसी के पास विंडोज 8 वाला अगर लैपटॉप है, आई एम हैप्पी टू अगेन टेक अप ए स्पेशल क्लास और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, नो प्रॉब्लम। मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहो तो आप विंडोज 8 अगर अरेंज करोगे लैपटॉप, आई विल टेक अनदर क्लास और मैं आपको Sure, sir. WWI समझाऊंगा, बट विदाउट So, sir, दैट today इट इज is नॉट the पॉसिबल। last class. एक और बार ट्राई करना चाहता था, बट इवन इन सोनिया सिस्टम इट इज नॉट हैपनिंग। तो ये थोड़ा एक प्रॉब्लम है। अनफॉर्चुनेटली डेमो सिस्टम्स आर नॉट 100% एक्यूरेट, उसमें भी हमेशा प्रॉब्लम रहता है, right? That is why it's not working on Windows 11 and now I see it is not working on Windows 10 also. Okay, sir. But let me know अगर आप अरेंज कर सकते हो, if it is possible you can please message me in the group. ग्रुप तो ऐसा ही रहेगा, WhatsApp ग्रुप। तो अगर कुछ ऐसा है you can please message me, we'll connect again and we'll take up WWA. Okay, sir. Okay जी, clear है, fine. So this was what waste management में बचा था अब तक, and I hope I have given you enough information on waste management. S- Okay, and also Sir, it is CV, अगर actually आप I have CV not sample received, पता sir, नहीं मैंने भेजा है कि नहीं, I samples. will share that sample CV also. You can prepare and send it back to me. मैं एक बार चेक करूंगा, if it is good then you Sure. can start applying. Sure. Okay, any Sure, other sir. help do you need? Okay, sir. और कुछ आपको कुछ हेल्प चाहिए? हाँ, regarding the video recording and documents in one folder, please give me some time. मैं थोड़ा बिजी था, इस हफ्ते नहीं हो पाया, but I Sure, will sir. do it. मैं आपको शेयर करूंगा, don't worry about that. Thank you so much, sir. Apart from that, अगर आपको और भी कुछ हेल्प चाहिए, if you need any kind of assistance, please let me know. Yeah, today I have completed waste management, so today is the last class. But if you have any doubts or any concerns, you can call me or message me, and you can discuss with me. See, I'll be available. Already, As far as class and already I have syllabus is applied, sir. concerned, Actually, today I from have 2 weeks, completed. I'm getting calls actually, and I got Yeah. like most of Except for the from Shoma, the I Accenture, have to take up Deloitte, basic almost data all and from tools all for the her. top and So IT Shoma will companies. I be got it, again attending and my even I have classes. posted my resume in their But for portal rest also. of you, I have completed. But there is a one thing they are asking like minimum of 2 to 3 years. So it's not keep on trying. Okay. So if you need anything, any help at all, please don't hesitate. Okay. You can Actually, call I me. only mentioned 1 year, sir. Right. With my So keep that in mind. previous company, I have a relevant And experience Khushbu, with I SAP don't know if I have EHS, shared the sample but CV with you. If not, I I will kept share. both as the EHS and the And SAP. yeah, you have not received. Fine. I will share it. मैं वो भी share करता हूँ, and also the recordings which you asked, that also I will share. You prepare your CV and send it Okay. back to me. Now I think it is high time. You have to start applying. If you want to change your career, you start now. Yes, in my Indonesia they want it. Okay, Yeah. so prepare your CV, send it back to me. If any changes are required, I will tell you. But otherwise, you can directly apply it. Yeah. Yeah, my pleasure, Khushbu. My pleasure. And all of you, please stay connected. If any updates, if there are any job openings, that also I will share Okay, in sir. the Okay. group so that you can apply. And I have shared my Lot of CV, job sir. openings I have Please been let me know if sharing any all these changes days. required. I don't know how many That's of my you actually updated CV. applied, but in future also, whenever there are Hello, any sir. job Please openings, share the I will share it with you resume people, template and regarding you the also EHS. search and start applying. You just update on your Naukri profile. Oh, no, They sir. will start calling Still, you. I didn't receive it. बस इतना है, you have to, हाँ,